Hello everyone. In the previous video, we have learned about the fundamental data types. अब हम इसके आगे दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी तक आपने क्या सीखा है जस्ट यू हैव स्टोर्ड द वैल्यू और पाइथन वर्चुअल मशीन जो है उसको अंडरस्टैंड करने कर पा रही है कि वो इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, बूलियन है या फिर वो स्ट्रिंग टाइप है। लेकिन यदि जो प्रोग्रामर किसी कोड को कर रहा है, हाउ द प्रोग्रामर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई जो डेटा स्टोर्ड है वो किस टाइप का डेटा है, उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट वन इज द टाइप फंक्शन, another one is id function. So before starting with the type and id, here I want to give one generalized statement in python. Everything in python, everything is object. Python, everything is object. What does it mean? Let be understood. Suppose if I am writing x is equal to 5. So basically, you know this is the fundamental integer type data type, but during the code, you want to understood what is the type of this x. So just you need to write this code. So can you see the output? That is a class int. So this is a class int. What does it mean? This x is a reference variable. Now I'm changing the terminology here. You need to understand very carefully. Till now I was using the x as a variable which is storing the value 5. Now I'm saying this in a Python, everything is object. So x is a variable which is pointing to the object, integer type of object, that is 5. मतलब एक मेमोरी लोकेशन है आपके पास, मेमोरी में उस मेमोरी लोकेशन 5 स्टोर है और वो जो x है आपको उस 5 को पॉइंट कर रहा है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दिस x is a object when I write print id of x. When you run this code, the id of x. So you can see you are having the memory location and you are having the class that is the integer. So when it is returning the class integer, it is mean that x is a reference variable which is pointing to the object that is the integer type. यदि ये object है, so let I see, is there any limit to store something in this object? Let me do this and just I print. So you can see here, let I do more and again I run this code. Let I do more and running this code. What does it mean? If there is no limitation kind of thing like C and C++, जहाँ पर आपके पास डेटा टाइप है, आपका इंटीजर है, तो उसकी एक लिमिट है कि वो इतनी चीज़ों को स्टोर कर पाएगा। बट यू कैन सी हियर वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द लिमिट and it is able to store and it is successfully running the code. It means that वो जो मेमोरी लोकेशन है जिस पर उस ऑब्जेक्ट को स्टोर किया गया था, हम उसकी साइज को बढ़ा पा रहे हैं। So I'm saying this, the x is a reference variable which is pointing to the integer type of object. This is what the important terminology. So here are two important functions. One is the type and second one is the id. So type is used to identify the type of that variable and the id is used to identify the memory location of that variable. So this is all about the id and type function. For this video, it's over from my side. Thank you.